Hello children. After the plight of peasant and artisans, fear of loss of religion and caste, now today we are starting the grievances of the Indian soldiers. The rising discontent in the country was bound to refluence the Indian soldiers who formed 7/8 of the British government's troops in India. They felt the injustices which the whole old ruling families in India had been suffering, the increased misery which the common people had to suffer affected the soldiers directly as they were an integral part of Indian society. Besides, the Indian soldiers had their own specific grievances because of which they became the pioneers of the struggle. There was no scope for the Indian soldiers to rise in the hierarchy of the army, as the avenues for promotion were closed to them in the existing system. The higher posts in the army were reserved for the European officers. There was great disparity between the salaries of Indian and European soldiers. The Indian soldiers were treated with contempt by their European counterparts. They were given an extra allowance when they were sent to war. When a war was over and the territory they had helped to conquer was annexed, the allowance was withdrawn. At the same time, the Indian soldiers were given a new rifle. Their cartridges were smeared with cows' and pigs' fat as grease. These cartridges had to be bitten before loading. This offended the religious sentiments of both Hindu and Muslim soldiers. The offense caused to their religious sentiments aggravated their resentment and created an explosive situation. It became the immediate cause of the struggle. The uprising of the soldiers at Meerut had been sparked off on 10th May 1857, which 85 Indian soldiers were convicted and sentenced to long period of imprisonment for their refusal to use the greased cartridges in Barakpur. Mangal Pandey refused to load these cartridges. When forced to obey orders, he attacked two English officers. Mangal Pandey was captured and sentenced to death by hanging. The began at this point. With the capture of Delhi by the rebel forces and the proclamation of Bahadur Shah as Emperor of India, the struggle spread over a wide area in the country. The Mughal emperor, who had actually been a weak ruler with little powers, suddenly became the rallying point of all those who wanted to put an end to foreign rule. Even in regions where there was no large-scale uprising, unrest prevailed, causing panic among the Britishers. There was no large-scale Britishers. There were uprising in Assam, Odisha, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Sindh, Rajasthan, Maharashtra, Hyderabad, Punjab and Bengal. At places, the rebellion was localized or confined to army barracks and was easily suppressed. At some places, the British has disarmed the Indian soldiers as a
precautions. So students, इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने भी विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ. 7th to 8th जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में, इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो सोल्जर्स थे 7th 8th उनकी जो आर्मी थी उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा विद्रोह किया. उसका मेन जो कारण था कि उनकी जो फीलिंग्स थी, जो उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था. उनके साथ बहुत ज्यादा पार्शियलिटी की जा रही थी. यूरोपियन जो वहां पर सोल्जर्स थे उनके और हिंदू जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके बीच में बहुत ज्यादा पार्शियलिटी होती थी. उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलते थे, उनकी सैलरी भी ज्यादा थी, बड़ी बड़ी जो पोस्ट थी वो उनके लिए, यूरोपियन सोल्जर्स के लिए फिक्स थी, और जबकि इंडियन सोल्जर्स के लिए छोटी छोटी पोस्ट ही उनको दी जाती थी. और इसके बाद एक बार क्या हुआ कि काऊ और पिग से बने हुए जो बंदूक होती है, एक बंदूक में कारतूस भरे जाते हैं, तो वो काऊ और पिग से बने हुए थे. तो ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सोल्जर्स के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थी उनके विरोध में थे, और इसलिए और उन्हें क्या करना होता था, मुंह से दबाने के बाद उसे आर्म्स में भर के चलाना होता था. तो इसका दोनों ने विरोध किया, हिंदुओं ने भी मुस्लिम्स ने भी. और सबसे पहला इसमें मंगल पांडे का नाम आता है कि मंगल पांडे जी ने 1857 में 10 मई को उन्होंने ये स्ट्रगल की शुरुआत हुई. उन्होंने सबसे पहले मना किया कि हम इन कारतूस को यूज नहीं करेंगे. तो उनको जब 2 ऑफिसर्स उनको ये बोलने के लिए गए कि करना पड़ेगा आपको, तो उन्होंने उन दोनों ऑफिसर्स पे अटैक कर दिया और इसके बदले में उन्हें फांसी की सजा दी गई. यह ही एक पॉइंट था, शुरुआत थी, जबकि 1857 का जो युद्ध था, वो स्ट्रगल था, वो बड़े पैमाने पर होने वाला था. इसके बाद बहादुर शाह जफर को जो एम्परर बनाया गया था, लेकिन वो बहुत वीक एम्परर थे. जो जनता ने, जो सभी लोगों ने मिलकर के बना दिया था कि हम अंग्रेजी शासन को नहीं मानेंगे और ये हमारे राजा होंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे. उनके पास आर्मी भी नहीं थी और पैसे भी नहीं थे. तो जो ब्रिटिशर्स थे वो इनको इजीली दबा पाए. लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें जो थी वो एक बहुत बड़े अपराइजिंग के रूप में उभर रही थी, और एक साथ ये अपराइजिंग स्टार्ट हुआ, ये विद्रोह स्टार्ट हुआ. तो ये आसाम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, सिंध, राजस्थान, महाराष्ट्र, हैदराबाद, पंजाब और बंगाल में ये जो रिवॉल्यूशन था ये अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुआ. और धीरे धीरे जो ये आर्मी बैरक से होते हुए और भी जगहों पर फैल गया, लेकिन अंग्रेजों ने इसे बहुत इजीली दबा लिया. और इसके बाद अंग्रेजों ने जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको डिसआर्म भी कर दिया, उनको हथियार देना बंद कर दिया.